हाय गाइस, आज कुछ अलग होने वाला है। आज मैं बात करूंगा परफ्यूम्स के बारे में और हिंदी में बात करूंगा। दो किस्म के फ्रेग्रेंसेस आते हैं। एक होती है डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस जो सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स रखते हैं, जैसे कि अरमानी एंड शनेल एंड डियोर। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए आपके डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस के। सेकंड फ्रेग्रेंसेस आती है आपकी नीश फ्रेग्रेंसेस। नीश का मतलब क्या होता है? यूजुअली नीश फ्रेग्रेंसेस थोड़ी महंगी होती है, ज़्यादा महंगी होती है, 2 गुना प्राइस होता है। और यूजुअली इन फ्रेग्रेंसेस आर यूनिसेक्स, दे आर यूनिसेक्स, मैन एंड वुमेन बोथ कैन वेयर देम। दे आर सपोज टू बी लॉन्ग लास्टिंग, बट अक्सर मैंने देखा है ऐसा होता नहीं है। तो एनीवेज, मैं पिछले 6 महीनों से 3-6 महीनों से काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस खरीद चुका हूँ। एंड आज मैं बात करूँगा टॉप 10 नीश फ्रेग्रेंसेस फॉर मी। अब एक बात आप ज़रूर याद रखना कि ये 10 जो नीश फ्रेग्रेंसेस है, शायद मेरे पास टोटल 15 या 17 नीश फ्रेग्रेंसेस होंगे इफ़ एट ऑल, लेकिन ये 10 फ्रेग्रेंसेस मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर मैं कोई नंबर 10 में भी मेंशन कर रहा हूँ, समडे इट कैन बी माय फेवरेट फ्रेग्रेंस। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं विस्की के बारे में बात करता हूँ, कोई भी फ्रेग्रेंस जो नंबर 10 पे है वो नंबर 1 भी हो सकती है। जिस तरीके से मुझे कभी कभी जेमिसन पसंद है, जबकि वो मेरी टॉप 10 विस्कीज़ में भी नहीं आती, बट दैट डजंट मीन इट्स द बेस्ट विस्की। आई ओनली बिलीव कि as human beings we are very complicated and our choice and options are keep changing on dependent on the mood and the circumstance. So these are my top 10 niche fragrances. जी हाँ, so let's start with number 10. अब याद रखना, number 10 can also be number 1 on the day I wear it. So number 10 for me this is a 50 ml bottle of Xerjoff Alexandria 2. जी हाँ, बहुत ही फेमस ब्रांड है Xerjoff, इटालियन ब्रांड है। दे हैव ओवर 40 to 60 niche fragrances and this is one of the best ones. Now let me talk about this. अगर आपने कभी Alexandria 2 नहीं स्मेल करी तो मैं आपको वही अंदाज दूंगा जो Alexandria 2 में मेरे हिसाब से आती है। एक्सट्रीमली वेलकमिंग, ऐसा लगता है किसी शहजादे की एंट्री हो चुकी है या किसी शहजादी की एंट्री हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग एक डर्टी ऊड का इसमें प्रेजेंस है। एंड आई से डर्टी ऊड, आई डोंट से वेरी रिफाइंड ऊड, बिकॉज ऊड फॉर मी विल चैलेंज योर। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी लीनर है एक तरीके से, काफ़ी ठहराव है इसमें, एक तरीके की गर्माहट है, एक very good rose musky airy scintillated smell, and मैं बहुत दिनों बाद इसको स्मेल कर रहा हूँ and I have missed it. This fragrance is very expensive. I mean, this half cost me maybe 15,000 or 17,000 rupees, and that is after getting a good deal for it. अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेग्रेंस चाहिए, you can telegram me at the comer. Smells very good, very luxurious. इतनी लॉन्जिविटी इसकी नहीं है। अगर आप 5-7 लगाएंगे तो हाँ, आपको दिन भर स्मेल आएगी, लेकिन परछाई में आएगी, थोड़ी रुक के आएगी। एनीवेज, आई लव Alexandria 2 एंड ऑन सम डेज दिस इज द बेस्ट फ्रेग्रेंस। इसका जो ऊड का नोट है दैट इज रिमार्केबल। इसमें कुछ रोज या पेटल्स के एलिमेंट है विच आर वेरी गुड। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, so you should hear me, but I'm not going to go into the notes and bore you with all that. उसके लिए बहुत सारे चैनल पर है बोर करने के लिए, right? ये मेरी पहली niche fragrance थी and I quite like it. This is also a tester bottle which a friend of mine helped me get, and I paid about 12 to 13,000 for 100 ml of this. This is Xerjoff की एक लाइन है Casamorati, and Casamorati की ये आती है Mefisto. This is a very unique looking bottle. इसमें एक टैसल भी आता है जो मैंने हटाया हुआ है because for whatever reason I've taken it off. I like this a lot. बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है and this is also from the house of Xerjoff जो मैंने नंबर 10 में आया था। So ये नंबर 9 है, it's called Mefisto. Let us spray some on this. जबकि this is the kind of smell जो आपके साथ रहेगी, even if you don't smell it, it will always remain with you. A beautiful use of rose. इस फ्रेग्रेंस ने मुझे बताया कि मुझे रोजेस बहुत पसंद है, and this smells so unique, airy, musky, silvery,
डजन हैव द बेस्ट प्रोजेक्शन। आपको पहले 1 घंटे काफ़ी प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद ये थोड़ा गायब सा हो जाएगा, तो आपको रीफॉर्मुलेट रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी भी कोई इतनी खास स्टे नहीं है, लेकिन जितनी भी है आई क्वाइट लाइक इट। इट इज़ वेरी, अब नोट्स की बात करें तो टेस्टर बॉटल के पीछे हमेशा नोट्स लिखे होते हैं। इसमें लिखा है एम्बर, मस्क, माइसोर सैंडलवुड ऑन द बेस नोट, हार्ट नोट में रोज, एब्सोल्यूट, फ्लोरेंटाइन, आयरिस, little bit iris, bergamot and lavender flowers, calabrian lemon and grapefruit on the top। यार मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि this smells like एक अरमैफ की बोतल आती है, I'm forgetting the name of it, उसकी फोटोग्राफ डाल दूंगा। And this smells like Creed Silver Mountain water। However, Creed's Silver Mountain water is supposed to be more effervescent and more elixir like, whereas this is supposed to be a little more grounded. So I quite like Casamorati Mefisto, and again this is my number 9, but on some days if it's a winter day and you are traveling somewhere, this can be amazing. When I drove from Delhi to Amritsar, I wore this 4-5 times and मैं पागल हो गया था। इसका रिव्यू भी किया मैंने, dedicated review, so do watch that, I'll put that link। There you go, this is Mefisto from Casamorati by Xerjoff। Be from my favorite house of fragrances, and my favorite house of fragrances, no prizes for guessing, is Nishane। Nishane, this is called Wulong Cha X। Wulong Cha means good tea, dark tea in Chinese। यहाँ पे शंघाई भी लिखा है। शंघाई बहुत ही अमेजिंग शहर है, चाइना बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। अगर आप कभी नहीं गए तो मैं गुजारिश करूँगा आप अपने साथ कुछ अच्छी बातें करिए और ज़रूर जाइए चाइना, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग कंट्री, वे बेटर देन अमेरिका ऑल्सो, एंड आई हैव लिव्ड इन अमेरिका। तो वुलोंग चा एक्स पे आते हो आप, दिस इज 100 ml बॉटल। ये टेस्टर नहीं है, आई एम नॉट श्योर दिस इज टेस्टर, नो आई गॉट प्रॉपर बॉक्स में ये। अगेन अब निशाने की क्या खासियत है, दिस इज अ टर्किश कंपनी, इनकी खासियत ये है कि दे टेंड टू स्टे ऑन द स्किन फॉर अ लॉन्ग टाइम। Wulong Cha X is the flanker to Wulong Cha, which is a more famous, better selling, but this is supposed to be a more citrus version of it. And yes, this is the best citrus fragrance you can probably buy right now in the world. I love it so much. There's a beautiful greenness, which you can also see on its font. There's a beautiful earthiness, a nice muskiness, maybe some bergamot. This smells like Pink Floyd's Coming Back to Life. This smells like being stuck outside in the rain and missing your loved one. This smells like a heartbreak. It smells beautiful. It smells like a lady, but who cares, man? I love how this smells, and I don't know ये कितनी concentrated होती है. I don't really know, but I quite like it. अब इसकी एक नेगेटिव अगर मैं बताऊंगा वुलोंग चा एक्स का, तो वो ये है कि ये आप लेयर करेंगे तो बेटर रहेगी, बट आप इसको अगर इंडिपेंडेंटली पहनेंगे अपने स्किन पे, इट मे नॉट लास्ट यू वेरी लॉन्ग एंड इट माइट एवेपोरेट। आप जिसने आपने पहनी हुई है आपको शायद स्मेल नहीं आएगी, बट किसी और को आ सकती है, बट इट स्मेल्स अगेन वेरी गुड। बट दिस इज अ ब्रिलियंट फ्रेग्रेंस, आई रियली लाइक इट, इवन दो आई गिव इट मे बी a 7.5 out of 10, आई स्टिल would not, I'm very happy about this purchase. This is my number 8 Wulong Cha X. So I will go with a safe option, which is Hacivat from the house of Nishane। ये मैंने recently खरीदी थी, मैंने अपने दोस्त से ये बोरो करी थी Nishane Hacivat, और उसकी Hacivat मुझे बहुत पसंद आई। कई लोग कहते हैं ये क्रीड एवेंटिस के DNA पे बेस्ड है, आप मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा हाँ ज़रूर, क्रीड एवेंटिस जो सरताज माना जाता है, बेस्ट एवर माना जाता है नीश फ्रेग्रेंस की दुनिया में। This is a remake of that, but in my opinion, the story is a little different and it requires a little more words. So that's why I'm here to give you some little more words on this. Beautiful looking bottle. This is a 50 ml I have. You also get this in 100 ml. And this is extrait de perfume concentration, which means the concentration of perfume is more. It is likely to last you more. Oh my God, what do I say about this? This smells like the best कीचड़ in the world. This smells like the best mud in the world. This smells so beautiful, so beautifully mossy and green. Aventus में ज़्यादा स्टे नहीं है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है Aventus से। आप इसके अगर 4-5 लगा लेंगे तो आपको लगेगा आपने बहुत ज़्यादा लगा ली है। एंड फॉर दैट रीज़न आई लाइक द Hacivat। मैंने एक और बात नोटिस करी है कि
ये वाली हाचीवात जो ब्रांड न्यू है इसकी परफॉर्मेंस बेटर है दैन माई फ्रेंड्स हाचीवात, बट उसकी जो हाचीवात थी उसकी स्मेल बेटर थी, जबकि इसकी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल स्मेल है. How much does something like this cost? Maybe 10,000 rupees for a 50 ml and maybe about 15 to 18,000 for a 100 ml. Is it worth it? I think it is worth it. Many people say this is the best niche fragrance that they've ever had. Many of you, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सारी fragrances खरीदिए और आप थोड़े पक गए हैं Davidoff Cool Water से, Aqua di Gio से, अपना YSL perfume से, you can definitely try and get the Hacivat. I think this is, forgive my language, but a fucking phenomenal fragrance, and I would not be shy with the rating of this, and I would give this a complete 5 stars. इसकी ख़राब बात ये है कि कई बार ये बहुत क्रूअल लगती है. It's like a cruel prince, and it may not always be your fragrance of the day. But on the day you like this, I doubt that there is any fragrance. Here, Nishane Hacivat and Wulong Cha, I think you're gonna have a blast. Love this fragrance, absolutely incredible. I got this tester box and pretty good. Like number 6 के लिए मेरे पास 2 options है. I want to be completely honest and transparent in this video, so I'm gonna go out of a limb and do the more boring action. Sorry, more daring and bold action. This is called Naxos by the house of Xerjoff. I know many of you are heartbreaking because you are like, by the way, इस रूम में अब खाली हाचीवात की स्मेल आ रही है. Okay, so this is Naxos from the house of. अब मुझे इस रूम में खाली 2 फ्रेग्रेंस की स्मेल आ रही है, एक मेफेस्टो और एक हाचीवात की, एंड क्या कॉम्बिनेशन है. Going back to Naxos by Xerjoff, this was my first or second experiment with niche fragrances, and इसके साथ मैंने एक और मंगाई थी फ्रेग्रेंस, उसकी बात नहीं करेंगे. बट दिस इज Naxos by Xerjoff. कई लोग कहेंगे दिस इज द बेस्ट फ्रेग्रेंस, एंड if you again want to have something which is very bold, manly, this is it. This is considered the best tobacco lavender fragrance in the world. And look at the bottle, look at how beautiful it is, how enrapturing it is. It has 100 things going on in it. It's a very manly, very opulent, very sexy fragrance. And इस fragrance को भी मैं 10 में से 10 दूंगा. वो इसलिए बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, विच इज़ अ शॉकर. अभी तक जितनी भी फ्रेग्रेंसेस आई थी इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, एंड ये कभी आपको इरिटेट नहीं करेगा विद अ लॉट ऑफ इट. आपको मुझे जब मैंने ये लेके आया था, एक स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा बोर करूंगा. व्हेन आई गॉट दिस फ्रेग्रेंस आई हेटेड इट, आई वांटेड टू सेल इट, बट आई वाज टोल्ड टू वेट एंड आई वेटेड एंड आई एम सो ग्लैड. But Xerjoff Naxos has notes of tobacco, lavender. It's a very, very pleasant, very, very refreshing, very honeydewed, very limonal, very brilliant fragrance. I love this fragrance, and it's the number 6 on this list. तो आपको excited होना चाहिए because ये अगर number 6 है, तो you can only imagine what is coming next. Well, it smells brilliant. B612. मैं अक्सर कहता हूँ निशाने की B612 इज़ द बेस्ट फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस हाउस ऑफ निशाने. यहाँ पे लिखा है लियोन. आई थिंक लियोन इज़ अ सिटी इन स्पेन, आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग बार्बर शॉप मेथनॉल मिंट फ्रेग्रेंस. दिस हैज़ सच गुड स्टे एंड प्रोजेक्शन. इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, इसकी स्टे बहुत अच्छी है. माई गॉड, दिस स्मेल्स लाइक sex. This smells so good. Wow. This might be Nishane's best fragrance, which means that it's better than Hacivat and it's better than Wulong Cha in my opinion. Wulong Cha X. I love this fragrance. इसको भी मैं 10 में से 9 दूंगा शायद. लव इट, बहुत अमेजिंग स्मेल है. अगर आप ये लगाएंगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी और चीज़ की. B612 का मैं मतलब भूल रहा हूँ, इसका मीनिंग कुछ होता है, पर वो सब करके बोर नहीं करूँगा आपको. स्टोरी बुक नहीं बताऊँगा मैं आपको, सिर्फ ये बताऊँगा वेदर इज़ वर्थ बाइंग और नॉट. यू कैन गेट अ 50 ml of this for about $10,000 bucks. Maybe you can get it for $8,000 also.
Like I said, Telegram में मुझे contact कीजिए. I love this fragrance. How do I describe it? Man, like I said, minty, barbershop, fresh, refreshing, shower gel, sex. This is beautiful. You should really consider getting Nishane B612. If you have no Nishane, probably you should consider this or the Hacivat. Number 4 fragrance is another fragrance from the house of Xerjoff. This is Neo. Ji haan. This is Neo from Xerjoff. I think this is a very interesting minty, shower jelly, beautiful take from the house of Xerjoff. मुझे लगता है ये सिर्फ 50 मिलीलीटर में आती है and I absolutely love it, you know. And इसकी अच्छी बात ये है कि ये बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफाइंड है, बहुत तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड इसका एफर्ट है. दिल तो कर रहा है स्किन पे लगा लूँ, बट लेट मी जस्ट स्प्रे. I can smell a minty, zesty sea spray of refreshing, of very fresh fragrance. Minty, zesty, silverish. बहुत रिमार्केबल फ्रेग्रेंस है. ये ओल्ड स्कूलर को भी पसंद आएगी, ये न्यू स्कूलर को भी पसंद आएगी. अगर आपको ओल्ड स्पाइस पसंद है या आपको आफ्टर शेव वाली स्मेल पसंद है, आपको जिलेट की स्मेल पसंद है, तो ये जिलेट का बाप का बाप का बाप है. Absolutely love this Neo by Xerjoff. This is from the Shooting Stars line. अब Xerjoff की भी जो fragrances आती है, they come from different lines, and this comes from the Shooting Star lines. Every single line probably has 3 or 4 fragrances. Shooting Stars, Xerjoff, Neo, you cannot go wrong. This is love at first sight. I would give this very high marks. And recently this has become my favorite fragrance from Xerjoff. So I absolutely love it, and you can probably consider getting it. If you need to buy it, you let me know. अब नंबर 3 के लिए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, बट मैं चुनूंगा निशाने की आनी as my number 3. Now, why am I choosing Nishane Ani as my number 3? The reason for that is this fragrance got me interested in niche fragrances. This fragrance, I've often said, it's like black magic. बिकॉज ये इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत ही प्लीजिंग है टू द पर्सन हु इज वेयरिंग इट. नाउ प्लीज बेयर इन माइंड, अगर आप फ्रेग्रेंसेस खरीद रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, मे बी दीज आर नॉट द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, बट इफ यू लाइक टू प्लीज योर सेल्फ एंड देन मे बी प्लीज अदर्स, you're watching the right video. Smells like chocolate, caramel, एंड कुछ टाइम बाद इसमें एक बहुत ही पॉलिश्ड आयरिश नोट भी आता है. लैवेंडर भी थोड़ा बहुत यूज हुआ है. कमाल का फ्रेग्रेंस है यार. दिस इज निशाने आनी फ्रॉम पेरिस. सॉरी फॉर दैट. आई लव दिस मैन. आई लव दिस. व्हाट्स नॉट टू लव. दिस स्टेज वेरी लॉन्ग, और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वाई आनी इज माई नंबर 3 फ्रेग्रेंस, एंड इट जस्ट इज. So I'm not going to talk much about this. I have done a video for this. Nishane Ani, you have to have this fragrance. Who should buy this? Who should buy this? The dreamers should buy this. The poets should buy this. The people who speak good language should buy this. Who should not buy it? Young boys. I don't think you'd appreciate it. अगर मुझे इसका कोई विस्की इक्विवेलेंट बोलना पड़े तो मैं कहूँगा ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व. I have Creed Aventus as my potential number 1, and I have my Gentle Fluidity from MFK. Gentle Fluidity, let's take this as our runner-up today. This is the second best fragrance that I own from the niche houses. और आजकल मेरी favorite fragrance बनी हुई है ये. This smells like W Goa. This smells like Maldives. This smells like living a very rich life no matter where you are. आप जब ये पहनेंगे आपको लगेगा आपने किसी क्लब में एंटर कर दिया है और आप अब बदल से गए हैं. अब आपका मूड वैसा नहीं हो सकता जो इसको लगाने से पहले था. अलाउड नहीं है. सुनाई दिया? फिर से बोलता हूँ आपके लिए, बिकॉज आपके कान थोड़े खराब है. ये जेंटल फ्लूइडिटी सिल्वर, यू आर नॉट अलाउड टू बी इन अ बैड मूड आफ्टर स्प्रेइंग दिस. दिस स्मेल्स लाइक Maldives. This smells like the riches of the world. This smells like the Caribbean islands I've never been to. This smells like Bora Bora, which I've been to. I absolutely effing love
MFK GFS फॉर दिस। इसकी प्राइस अगर 5,000 रुपये ज़्यादा भी होगी मैं देने को तैयार हूँ। इसकी अब खामियाँ बताता हूँ आपको, ये रुकेगा नहीं आपके स्किन पे इतना। ये बहुत ही लीनियर फ्रेगरेंस है जो शुरू में आपको स्मेल आ रही है, आपको हट के छुप के छोटी बच्ची जैसे 2 घंटे बाद थोड़ी बहुत। माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली मैं आईफोन में शूट कर रहा हूँ बिकॉज मेरा कैमरा ख़राब हो चुका है और आईफोन में ये वीडियो कम से कम 25 GB ले चुका है। क्वालिटी ठीक लग रही है आपको तो प्लीज़ बताना, आई वुड अप्रिशिएट दैट। तो मैं बात कर रहा था MFK की GFS की, एंड दिस इज़ रियली सुप्रीम सुपीरियर फ्रेगरेंस। अगर आपको सिर्फ एक फ्रेगरेंस चाहिए इस पूरी लिस्ट से तो मैं कहूँगा ये ख़रीदना, सोचना भी मत बाकियों के बारे में। ये कितनी महंगी आती है, आई थिंक ये 70 ml की है और मैंने तकरीबन 17,000 रुपये दिए थे इसके लिए। टोटली वर्थ इट। आई नो वेरी एक्सपेंसिव, you know, maybe I paid something less, I don't know, you ask me. Telegram the comer. Number 1, Creed Aventus. What do I say? Creed Aventus, क्या बोलूँ उसके बारे में जो नहीं कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि Creed Aventus पहले वाली नहीं रही जो पहले थी, जो 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, सानू की। मैं फ्रेगरेंसेस इसलिए नहीं खरीदता ताकि मेरे स्किन पे बहुत देर रखे। आई डोंट माइंड स्प्रेइंग इट अगेन एंड अगेन। और क्रीड एवेंटस के बारे में क्या बोलूँ आपको इसके बारे में। दिस इज़ अ 100 ml बॉटल, आई थिंक 100 ml बॉटल, और इसका मैं पहले रिव्यू भी कर चुका हूँ, अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ। इसकी क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द बेस्ट स्मेल ऑन दिस टेबल एंड आई एम हैप्पी मैंने ये चुना इमीडिएटली। बेस्ट स्मेल। This again smells like the luxuries of the world, the beautiful mysteries of the world, the beautiful women of the world, the beaches of the world, the sex of the world, the filth and the riches of the world. This smells like chandeliers in various lobbies that you've never been to. This smells like all the life that is happening. This smells like FOMO. जो FOMO आप अपने दिमाग में एक्सपीरियंस करते हैं, अपने भेजे में एक्सपीरियंस करते हैं, ये FOMO का सर्वनाश है। This is where life is fucking happening. And for that reason, Creed Aventus wins this entire test. You know, this is number 1. ये कितने की आती है? अगर आप रिटेल जाएंगे तो ये 30,000, 35,000, 38,000 रुपए की आती है 100 मिलीलीटर की बॉटल। खरीदो। Let's do a recap. Number 10 was Xerjoff Alexandria 2. Number 9 was Casamorati Mefisto. Number 8 was Wulong Cha X, I could be wrong. Number 7 was Nishane Hacivat. Number 6, I think, was B612, I could be wrong. Number 6 was Naxos, I think. I'm forgetting the list. But the number 2 and number 1, then I have the Neo, which I really love. I'm sorry, I've effed up the entire thing. This is my number 3. My number 2, MFK GFS, and these two are my number 3 and number 2. And number 1, without any prizes, Creed Aventus. Hope you enjoyed it. Subscribe to this channel. If you have any queries, you can ask me in the comment section, or you can telegram me at THEComer. My Instagram is harkamara. I do a lot of fragrance reviews on my Instagram, so follow me there. Thank you for watching. Peace out.